Hello everyone, welcome to the new video on this channel. So in this video, we will be talking about that massive order placed by Air India. So the first thing that comes to my mind is उस बड़े ऑर्डर का हम क्या करें, हमको क्या करना है उस ऑर्डर का, जितने भी 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है एयर इंडिया ने, बट हम क्या करें. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वीडियो वुड बी हाउ डज इट मैटर फॉर यू, राइट? इफ यू आर एन एस्पायरिंग पायलट, हाउ डज दैट बिग मैसिव ऑर्डर मैटर फॉर यू? ओके, सो तुमको 470 एयरक्राफ्ट से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है ना. तो कंपनी ने ऑर्डर किए. सो जस्ट टू गिव सम फैक्ट्स लाइक, जो 470 एयरक्राफ्ट का एयर इंडिया ने ऑर्डर दिया है उसमें लाइक 250 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो एयरबस को ऑर्डर दिया है एंड 220 बोइंग मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया है एयर इंडिया ने. एंड आउट ऑफ दोज 250 फ्रॉम एयरबस, द स्प्लिट बिटवीन A320 एंड A350 would be, means the narrow body and wide body would be like 210 नैरो बॉडीज हैं जो कि एयर इंडिया के शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस और डोमेस्टिक रूट्स में यूज होंगे. नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस, दोज आर 210 एंड 40 आर द वाइड बॉडी A350s, right? And if we see the fleet from the Boeing, then जो 190 है वो Boeing 737 Max है. That will be the narrow body aircraft 190. एंड 20 जो है वो बोइंग 787 है. एंड 10 जो है बोइंग 777 है, बोइंग 777. सो दैट मेक्स टोटल 220 फ्रॉम बोइंग एंड 250 फ्रॉम एयरबस. एंड जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं फ्रॉम एयरबस लाइक A350 एंड बोइंग 777, सो ये मेजरली एयर इंडिया विल बी यूजिंग इन द लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स लाइक टू सर्व इंडिया एंड द नॉर्थ अमेरिका रूट्स. ओके, एंड जो बोइंग 787 एंड नैरो बॉडीज हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस, डोमेस्टिक, अदर रूट्स पे यूज होने वाले हैं. सो दैट वाज from the orders side. But as I said, how does this matter to you? Means इतने big order का हम क्या करेंगे? So the thing is, some people are going blindly for the conventional CPL merely by looking all these news. Like Air India has given that massive order, so the future in the Indian aviation from the job perspective for a pilot looks bright. So let's go for the conventional CPL. Why to spend so much of money for the cadet pilot program? So basically वही है कि conventional के लिए लोग जाना चाह रहे हैं, but which is a very good thing because it seems to be a bright future, seeing the massive orders from the aircraft. But the thing is, वो 470 एयरक्राफ्ट हैं वो आने कब है, लाइक उनका इंडक्शन कब होना है, व्हाट इज द टाइमलाइन? सो पीपल ऑफन मिस दैट पर्सपेक्टिव फ्रॉम देयर थिंकिंग, लाइक उनका टाइमलाइंस क्या है इंडक्शन का एयरक्राफ्ट का. सो समटाइम्स डिलेज भी हो जाते हैं, राइट? ये कोई वेजिटेबल्स वगैरह तो है नहीं कि गए एंड पैसे दिए एंड ले लिया. सो कई बार सप्लाई चेन इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इंजन के अलग इश्यूज होते हैं सप्लायर्स साइड से. तो उसमें डिलेज काफी हो जाते हैं जब आपके ऑर्डर्स बहुत बिग होते हैं. तो इट डजेंट मीन कि ऑर्डर जो हुए हैं वो इंडक्ट नहीं होंगे एयरक्राफ्ट, बट डिलीवरी रेट स्लो होने लग जाता है कई बार, एंड इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, सो द थिंग इज, जो 470 एयरक्राफ्ट है वो कब तक डिलीवर होंगे वो एज सच कोई नहीं कह सकता. बट just the thing which you should keep in your mind is like what is the timeline of induction, like what rate the planes will get inducted into the Air India fleet, because that will only help you in judging if you need to go for conventional CPL. What is the right time? Means आपको ना टाइम करना पड़ेगा इंडस्ट्री का, कि एविएशन इंडस्ट्री में ये होता है कि टाइम करना पड़ता है आपकी सीपीएल को. लाइक आप कब सीपीएल करना चाह रहे हैं, लाइक आपके पास क्या रूम है वेट करने का, 1 साल 2 साल 3 साल क्या आप, या अगर आपकी एज काफी है तो आपको तुरंत इसी साल करना है. सो यू कांट वेट फॉर मोर देन 1 year 2 year. So it depends on person to person, case to case basis. So you need to time the industry. So अगर आपको क्या मैच करना है कि आपका क्या टाइमलाइन बैठ रहा है, लाइक आपके पास वेट करने का रूम है कि नहीं है. अगर आप 12th ही हो, 12th पास
जस्ट ही किया है, 1 साल पहले गया. सो यू हैव द रूम फॉर, सो यू हैव रूम टू वेट सम इयर्स, लाइक कि वो एयरक्राफ्ट जो ऑर्डर किए हैं वो कब इंडक्ट होना स्टार्ट होंगे, कब वैकेंसीज आना स्टार्ट होएगी. बिकॉज एकदम से तो एयरक्राफ्ट इंडक्ट होते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है. ऐसा नहीं है, मीन्स इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, धीरे धीरे करके निकलते हैं. लाइक फर्स्ट बैच ऑफ वैकेंसीज निकलेंगी, देन कुछ पीपल इंडक्ट होंगे, उनकी ट्रेनिंग्स होंगी, देन another batch after some time. So that after some time no one knows, like कितने months बाद आएगी vacancies and all. So everything is about timing when you are thinking for conventional CPL. So just for example, Akasa के जो CEO हैं उन्होंने एक बार कहा था that, like everyone knows, it's in the official news that they have ordered 72 aircrafts, right? But they do not have 72 aircrafts in their fleet right now. But they have put officially the numbers, like what would be the rate of inductions of the aircrafts पर ईयर. लाइक 2023 के एंड में उनके पास उनकी फ्लीट में कितने एयरक्राफ्ट होंगे, देन स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 उनके पास क्या एयरक्राफ्ट होंगे. सो दिस गिव्स अ गुड आइडिया, लाइक रेट ऑफ इंडक्शन क्या होने वाला है एयरक्राफ्ट्स का. Okay, so that is something that Akasa has put officially. So same thing I would say, like look for that in Air India order too. Okay, like so that is something you need to keep in mind while choosing um conventional CPL. क्योंकि the massive order वो itself would not help you in deciding if you need to go for conventional CPL or not. It is a good news, it is a positive, it spreads the positivity, but सोचना तो आपको वही है कि रेट ऑफ इंडक्शन क्या होने वाला है एयरक्राफ्ट्स का. क्योंकि जो वैकेंसीज आएंगी वो उसके बेसिस पे आएंगी, ना कि इतने बड़े ऑर्डर बुक में हमारे ऑर्डर्स हैं तो उसके बेसिस पे नहीं आएगी. तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, but if you can't wait, then you need to go for the cadet pilot program, or you need to go for conventional CPL, but it's kind of uncertainties, राइट. सो मैं जस्ट इस वीडियो के थ्रू यही कवर करना चाह रहा था कि कुछ लोगों से बात हुई थी, सो दे आर लाइक कि इट लुक्स वेरी पॉजिटिव दैट इंडिया ने काफी ऑर्डर्स किए हैं प्लेन्स. सो इट्स सो बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर CPL देयर विल बी लॉट ऑफ वैकेंसीज. तो ऐसा नहीं होता कि देयर विल बी लॉट ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि काफी सारे ऑर्डर्स किए हैं अगेन. क्योंकि आपका जब CPL कंप्लीट होगा, लेट्स से 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर, कुछ भी मान के चलिए, जितना भी टाइप रेटिंग एंड ऑल सब आप करके रेडी जब होंगे, तो तब क्या प्लेन्स इंडक्ट होने स्टार्ट हो गए हैं या अभी एक भी प्लेन इंडक्ट नहीं हुआ है, क्या डिले हो गया है रेट ऑफ इंडक्शन में. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इन द ऑर्डर से डिसीजन नहीं लेना है, आपको रेट ऑफ इंडक्शन से डिसीजन लेना है कि कितने एयरक्राफ्ट आने की पॉसिबिलिटी है 1 साल में, देन नेक्स्ट ईयर में कितने एयरक्राफ्ट आने की पॉसिबिलिटी है. सो दैट इज द वे यू नीड टू थिंक अबाउट इट. ओके, अदरवाइज it's a very good news that there are so many orders coming from the airlines for the aviation market. And I have also read somewhere that currently India is the seventh largest aviation market, and in the coming 10 years, it will be the third largest aviation market. And जो domestic passengers का जो growth है, that would be twofold in this decade, by the end of this decade. So it's a very positive news, and that's why the orders are also coming from the airlines, right? Because कंपनीज क्या प्रोजेक्ट कर लेती हैं कि क्या पैसेंजर लोड रहने वाला है, एंड क्या डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रेवल का डेटा रहने वाला है, क्या इंटरनेशनल पैसेंजर्स के नंबर्स रहने वाले हैं. सो ऑल दीज हैपन ऑन द प्रोजेक्शंस, right? I also covered this in that cadet pilot Vistara's cadet pilot program video, like how the cadet pilot programs are run by the airlines, means what is the logic behind it, what is the sense behind it. So all these things, orders are also happen based on the company's projection, company's growth projections. So orders इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि they have projected the growth in the passenger load factor and the growth
in the Indian aviation overall. ओके, सो ठीक है, वो हमारे अभी इतना काम की चीज नहीं है। हमारे काम की चीज क्या है कि आपको क्या सोच के कन्वेंशनल वर्सेस कैडेट पायलट प्रोग्राम के बारे में सोचना है। सो वी कांट कवर इट ऑन केस टू केस बेसिस इन द वीडियो। सो अल्टीमेटली सोचना तो आपने ही है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या टाइमिंग है, आप कैसे फंड करने की सोच रहे हैं प्रोग्राम को। तो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू। सो इस वीडियो में हम बस इतना ही कवर करेंगे। सो इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस चैनल, काइंडली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। We keep coming up with such videos wherein we just talk about anything about the pilot training or anything about the Indian aviation or anything you recommend me in the comment boxes. So I would be happy to make videos on that as well. Okay, so if you haven't subscribed, kindly subscribe it and see you guys in the next one. Thank you.